A very good morning, students. Students, today we will start the topic from the third physiographic division of India, and that is Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is a tableland, everybody knows it, and it is composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. ये बना कैसे था कि गोंडवाना लैंड का टुकड़ा टूटा, फिर वो ड्रिफ्ट सरकने लगा एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास. द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. इस प्लेट्यू में चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं और राउंडेड हिल्स हैं. दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डिकन प्लेट्यू. The part of Peninsular Plateau lying to the north of Narmada River and covering a major area of Malwa Plateau is known as Central Highland. Now let me clear it to you through this map. It is there. This map is there, and this is Tapi River and this is Narmada River, and above Narmada River this area is known as Central Highland. Okay, now let's move to the point. The Vindhya range is bounded by the Central Highlands on the south and the Aravalli on the northwest. जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उसके चारों तरफ, एक तरफ है विंध्याचल रेंजेस और दूसरी तरफ है अरावली की पहाड़ियाँ. द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, thus indicating the slope. The central highlands are wider in the west में चौड़ी हैं, but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as the Bundelkhand and Bhagelkhand. The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by river Damodar. Now this is a picture of a waterfall in Chota Nagpur Plateau. Now let's move to the second part. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of river Narmada. रिवर नर्मदा से नीचे वाला जो एरिया है उसको डिकन प्लेट्यू कहते हैं. The Satpura range flanks its broad based in the north, while the Mahadev, the Kamur hills and the Makal range form its eastern extensions. Locate these hills and ranges in the physical map of India. Now the Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. वेस्ट की तरफ से ये थोड़े ऊंचे हैं और ईस्ट की तरफ इनकी ऊंचाई कम है. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau, and three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi and the Jaintia. All these three mountain ranges or hill ranges, they are in Meghalaya. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateau. जो हमारा Deccan Plateau का western side edge है, किनारा, उसको western घाट कहते हैं और eastern का जो किनारा है ईस्ट का उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं. वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. ऑब्वियसली जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलते हैं. दे आर कॉन्टीन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली. ये कॉन्टीन्यूस हिल रेंजेस है, यहाँ पर बीच में पासिस नहीं है, दर्रा नहीं है, ज़्यादा चौड़ा गैप नहीं है, सिर्फ भीड़े पासिस हैं, उनसे क्रॉस किया जाता है. लोकेट द थाल, भोर एंड द पाल घाट्स इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. The western Ghats are higher than the eastern Ghats, and their average elevation, means height, is 900 to 1600 meter as against 600 meters of eastern Ghat. Means western Ghat की average height 900 मीटर से 1600 मीटर तक है और eastern Ghat की average height 600 मीटर है.
The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. इनको बीच में तोड़ किसने रखा, काट किसने रखा? रिवर्स ने, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist wind to rise along the western slopes of Ghats. The Western Ghats are known by different local names. Western Ghat के बहुत सारे local names हैं. The height of the Western Ghats progressively increasing from north to south. The highest peak include the Anaimudi. Western Ghat की जो highest peak है उसका नाम है Anaimudi and its height is 2696 meters. Sorry. And the Doda Beta 2637 meters. Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghat with a height of 1501 meter. Sevro Hills and the Javade Hills, they are located to the southeast of Eastern Ghats. Locate the famous hill stations of Udgamandalam, popularly known as Ooty, जिसको हम ऊटी कहते हैं, and the Kodaikanal. One of the distinct means different features of Peninsular Plateau is the black soil area north and Deccan Trap. एक सबसे अलग फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू में, और दिस इज़ ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. ब्लैक सॉइल निकलती ही वॉल्केनो से है, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, और वॉल्केनो से ही जो मैग्मा, जो लावा निकलता है, उसी से जो रॉक्स बनती हैं वो बेसिक रॉक्स होती हैं, उन्हीं को इग्नियस रॉक्स कहते हैं. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margins of the Peninsular Plateau, and these are highly eroded. ये ऊपर से घिस चुकी हैं hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. Now this is all for the day. Tomorrow we will be discussing the Indian desert and island groups, and so this is all for the day. Thank you and have a nice day.